हेलो दोस्तों, नवनीत शर्मा व्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर आया हूं। आज हम आए हैं बीर बिलिंग, जो इंडिया का नंबर 1 पैराग्लाइडिंग पॉइंट है। मैं अपने कजिन के साथ बीर बिलिंग घूमने आया हूं। अभी हम बैजनाथ से बीर बिलिंग की तरफ जा रहे हैं और रास्ते का खूबसूरत व्यू आपको दिखा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ के पहाड़ों का नजारा, हरी भरी वादियां और ठंडी ठंडी हवा सफर को और भी मजेदार बना देती है। रास्ते में हर तरफ प्रकृति की सुंदरता देखने को मिल रही है। अगर आप हिमाचल प्रदेश घूमने का प्लान बना रहे हैं तो बीर बिलिंग का ये राउट और यहाँ के व्यूज आपको जरूर पसंद आएंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बीर बिलिंग का पूरा सफर और वहां के शानदार नज़ारे।
mountains to be your friend. I wanna know if it mattered. I would have gone to war for you. I would have bent the earth in two just to get to our ever after. Something about this has changed. I wanna feel you close again. Don't let go. No, I don't want this to end. Whoa. Remember the start when you're breaking my heart again like blood on a pen. Would it matter then when everything starts to fade? I'm back like it's yesterday. Would it all consent? Would it matter then? Would it matter then? I did it all. I pulled the weight on my shoulders like it was fate. Don't tell me it was for nothing. You told me love wasn't true 'cause it didn't feel real to a cynic like you. But I'm pretty sure we walked into something. Something about this has changed. I wanna feel you close again. Don't let go. No, I don't want this to end. Remember the start when you're breaking my heart again like blood on a pen. Would it matter then when everything starts to fade? I'm back like it's yesterday. Or would it all consent? Would it matter then? Would it matter then? Would it matter then? Another time around the block. I loved you around the clock. Break of dawn, might as well be midnight. Talking on the dock. Everyone around us knows. They say we're soulmates and it shows. So I wanna see where this could go. This could go. Break the news to everyone. The long time wait is finally done. I wasn't hanging around for fun. You could be the one. Remember the start when you're जैसे हैं हम बीर रोड पार पहुंचे, रास्ते में हमने अपनी पैराग्लाइडिंग बुकिंग करवा ली। दोस्तों, अगर आप भी बीर बिलिंग में पैराग्लाइडिंग करना चाहते हैं तो बुकिंग का कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो में देख सकते हैं। इनका प्राइस भी काफी रीजनेबल है और इनके पास एक्सपीरियंस्ड और एक्सपर्ट पायलट्स हैं जो सेफ्टी का पूरा ध्यान रखते हैं। बुकिंग कंप्लीट करने के बाद हम और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गए और फिर हम निकल पड़े बिलिंग की तरफ, जहां से पैराग्लाइडिंग की टेक ऑफ होती है। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे, वैसे वैसे पहाड़ों के शानदार नज़ारे और भी खूबसूरत होते जा रहे थे। ठंडी हवा और बादलों से घिरे पहाड़ देखकर सफर का मजा ही कुछ और था। अब देखते हैं आगे बिलिंग पहुंचने के बाद हमें क्या क्या देखने को मिलता है। if it mattered. I would have gone to war for you. I would have bent the earth in two just to get to our ever after. Something about this has changed. I wanna feel you close again. Don't let go. No, I don't want this to end. Whoa. Remember the start when you're breaking my heart again like blood on a pen. Would it matter then when everything starts to fade? I'm back like it's
just to be your friend. I wanna know if it mattered. I would have gone to war for you. I would have bent the earth in two just to get to our ever after. Something about this has changed. I wanna feel you close again. Don't let go. No, I don't want this to end. Whoa. Remember the start when you're breaking my heart again. Like blood on a pen. Would it matter then when everything starts to fade? I'm back like it's yesterday. Would it almost end? Would it matter then? दोस्तों, जैसे हाय हम बिलिंग पहुंचे, अचानक मौसम खराब होना शुरू हो गया। कुछ हाई देर में काले काले बादल छा गए और ठंड भी काफी ज्यादा बढ़ गई। हवा भी तेज चलने लगी थी। लेकिन दोस्तों, मौसम खराब होने के बावजूद यहाँ के नजरे बहुत हाई सुंदर लग रहे थे। बादलों से घिरे पहाड़ और उनके बीच का व्यू देखकर दिल खुश हो गया। बहुत सारे लोग वहां मौजूद थे और सभी मौसम साफ होने का इंतजार कर रहे थे ताकि पैराग्लाइडिंग शुरू हो सके। हमने भी काफी देर तक वेट किया, लेकिन अफसोस मौसम साफ नहीं हुआ और सेफ्टी को देखते ह्यू पैराग्लाइडिंग बैंड हाई रही। इस वजह से हम इस बार पैराग्लाइडिंग नहीं कर पाए। थोड़ी निराशा जरूर हुई, लेकिन बीर बिलिंग का खूबसूरत मौसम और शानदार व्यू देखकर सफर यादगार बन गया। कोई बात नहीं दोस्तों, अगली बार फिर से आएंगे और जरूर पैराग्लाइडिंग करेंगे। अब चलिए आगे देखते हैं और इस खूबसूरत जगह के कुछ और नजरों का मजा लेते हैं।